Okay, so let us see the flow of control in a program. How does the statements are executed and in what order they are executed. Basically, our program is executed from top to bottom approach, from top to bottom, from first line to the last line. हमेशा याद रखिए कि जो एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का वो टॉप टू बॉटम ही होगा, अनलेस कोई डाइवर्टिंग या कोई इटरेटिव स्टेटमेंट नहीं आती, उसमें भी फिर वो रिपीट करने के बाद जब उसका साइकिल रिपीट हो जाता है देन इट अगेन गोज टू डाउनवर्ड्स. तो टॉप टू बॉटम फ्लो ऑफ कंट्रोल है और मेन से स्टार्ट होता है. मेन फंक्शन डेफिनेशंस आर ओनली कॉल्ड व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड. सो यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेमोरी के अंदर ये एक ब्लॉक के अंदर फंक्शन डिफाइन हो जाता है. दिस फंक्शन इज डिफाइंड इनटू मेमोरी. देन फर्स्ट लाइन रन होती है, ये फर्स्ट लाइन है इसकी. दिस विल बी एग्जीक्यूटेड और इसका जो आउटपुट है यहाँ पे आप चेक करिए, एंटर ए नंबर. ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ, हमने एक मैसेज दिया था स्क्रीन पे, एंटर ए नंबर, एंड यूजर ने 15 एंटर किया. That will be stored into A, right? Then after first line, second line will be executed. This is the main thing in flow of control, that after completion of the work of first line, next line will be executed. Now after completion of the first line, the second line is executed. Second line is having B is equal to input enter second number. So this message will be displayed on the screen. Let us see on the output screen, enter second number, and user have entered into 10. Then comes to the third statement. Now look at this statement carefully. This is a function call. Add is a function that we have defined earlier, and we are passing A and B, two arguments to this function. And what happens when a function is called? The flow of control goes to the function part. Flow of control goes to the function part. Then the function part is executed and all the lines of code present in the function part is executed one by one. अब इस एग्जांपल में देखिए, जैसे ही यहाँ पे हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल आया, the flow is transferred to this function with these values. जो वैल्यू A और B में है वो सारी की सारी वैल्यूज लेके फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आ गया, and these values are transferred to these variables. And here this statement is displaying the sum of these two values. And this is the last statement. Then here function is ended. अब function यहाँ पे खत्म हो गया, so वापस ये वहीं आ जाएगा जहाँ से ये गया था. अब फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आ गया. अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है इस प्रोग्राम में, so this will end the program. So this is how the flow of control is transferred from main program to the function part. Then all the statements of the functions are executed, and after completion of the function, the flow of control goes back to the main function. इसको हम एक एग्जांपल से और भी देख सकते हैं. अब देखिए मैं इसको मेन एग्जांपल में एक स्टेटमेंट और ऐड करता हूँ. मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और ऐड कर रहा हूँ. प्रिंट now we are in main. ठीक है, और मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट के अंदर भी ऐड करता हूँ, सॉरी फंक्शन के अंदर, ऐड फंक्शन में प्रिंट वी आर इन फंक्शन ऐड. जब जो स्टेटमेंट रन होगी वो स्क्रीन पे आएगी. नाउ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम अगेन, run module, and you check it. It is asking for the first number. I am providing the first number 5,
Then it is asking for the second number. Look at the program. This line is executing right now. This has been executed and we are on this line. Still our flow of control is not on the function. Our flow of control is at this point. Then I will give the value to this. I am giving value 20 to this and then press enter. After pressing the enter, after getting the value in this, our program is transferred to, I'm opening this, flow of control is transferred to this part. And from here, it went to this part. Then this line is executed. We are in function add. So here the result is we are in function add. Then it displayed the sum of two numbers, a plus b. Here is the sum of two numbers. Then this program ended and we come out of this on this statement. So see the order. First 2, then 3, then 4, and then print. Now we are in the main, 5th. So this is the order. We are in the main. Now you understand how the flow of control is transferred from main program to function call. Function definition statements are executed when the function call is done and flow of control is transferred to that. After completion of all the statements in the function definition, it is again back transferred to the main. So this is about how the flow of control is working in a program.